zone. So what is a zone? Zone is a group of faces in a crystal whose edges are parallel to each other. So zone are group of faces in a crystal whose edges are parallel to each other. Suppose तुम्हें example नहीं पड़ेगा, नॉले तुम्हें you can see the wall of your room or house जहाँ भी तुम्हें घरर कांथ गुरा देखिपारियो घरर चारि कांथ जो अछि ठीक अछि चारटा कांथ अछि ना नहीं चारटा वर्टिकल वॉल अछि ना नहीं घरर तो घरर जेकोनोसी दीटा एज नहीं देखो जोटी दीटा कांथ मीट करछन एनी एजेस तुम्हें चूज करा समान निज निज सहित पैरेलल हेबे कि नहीं तो ताको हम यदि सेवड़ा कंडीशन आसीबो ताले से चारटा फेस को हम कहबा गोटे जोन रे अछि चारटा हो तीनटा हो कि अधिक फेस हो चार हो समझरे में आम ये चार्टा वर्टिकल फेस चूज कर 1 2 3 4 चार्टा वर्टिकल जोटा कि घर कांथ चार्टा तुम नहीं पार इच एज रे इच एज जेकोसी एज तुम चूज कर दीटा चूज कर तीनटा चूज कर चार्टा चूज कर समस्त निज निज सहित पैरेलल है then we call that these four faces are in a zone बुझल समझरे एटी चार्टा फेस अछंती यदि फास्ट हम लिखि दवा अदर ए बी सी डी फेस जहाँ लिखता है तुम्हें तार सिंबल 1 नॉट नॉट है डी एफ डी एच जहाँ सिंबल लिख पर हमें नॉट 1 नॉट डी एफ जी एच जहाँ सिंबल हम लिख पर 1 बार नॉट नॉट ए ई सी जी जहाँ सिंबल हम लिख पर नॉट 1 बार नॉट ठीक है so these four faces are in a zone understood तो आम एमती जोटा ने गोटे जोन से आम यहाँ भी गोटे जोन नहीं पार नॉट नॉट 1 ठीक है 1 नॉट नॉट ठीक है नॉट नॉट 1 बार नॉट नॉट सो ए बी ई एफ जो फेस अच्छी सेटा हूँ कौन नॉट नॉट 1 और ए बी सी डी फेस 1 नॉट नॉट तापरे सी डी एच जी फेस सेटा कौन नॉट नॉट 1 बार तापरे ई एफ जी एच फेस होछ 1 बार ताकर एज को पूरा हेबे एटा गोटे एज हबो एटा गोटे एज हबो this one another एज this is another एज এই চারটা এই সেগুলো এই ফেস তো তুমি ধরলা কোন সাতটা দেখিব যে কোনসি দুইটা কাঁথ দেখিব ফ্লোর দেখিব মানে সব জায়গা ইন এ জোন চারটা को खाली कांथ देखियो दे आर इन ए तो এই তিনটা জোন এটি প্রেজেন্ট আছে তিনটা জোন এটি প্রেজেন্ট আছে আর গোটে তুমি নেই পারিব এটা নউছ তারপরে এটা নেবা পুনি এই পার্টটা নেবা এটা বুঝলা না जोन होची जोटी की ग्रुप ऑफ फेसेस इन ए क्रिस्टल व्हिच एजेस आर पैरेलल टू ईच अदर एजेस नॉट फेसेस वन नेक्स्ट हमें जोन एक्सिस तो जोन एक्सिस होची कौन इट इज एन एक्सिस दैट रन्स passes through the center of the crystal zone axis
It is an axis that passes through the center of the crystal and parallel to all faces in a zone. Zone रे जितने भी फेस अच्छी समस्त मुझे parallel है. तो इमेजिन करो ये कोटे एक्सिस सारा जाऊँगी कि घरर फ्लोर रु छाता पर्यंत सी एक्सिस हिसाब से कंसीडर करो. All four faces, vertical faces, they will be parallel to the axis. So that axis will be the zone axis of the face of the zone. Suppose this is our zone. One not one one bar not one bar not. This is our zone. So the zone axis of this zone will be this one. That is not one. For zone axis, we can use the symbol square bracket. You can use the symbol square bracket. For plane, you can use the symbol curly bracket. So we can write down this. One not one one bar not one bar not. They are in a zone, and the zone axis of this zone is not one. या किसी ना फॉर्म जोटा हमारा सिमेट्री पर डिपेंड करे जोटा तुमने पढ़ा है मतलब वो जो हॉलो हेडल फॉर्म तुम्हें जानला सब क्लासेस रे गोटे गोटे हॉलो हेडल फॉर्म हॉलो हेडल क्लास को नला हॉलो हेडल फॉर्म को तो गोटे पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम रे जो फॉर्म सबरो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री देखिबा ताको हॉलो हेडल फॉर्म कहै. So so hollow headal form means this form will exhibit highest degree of symmetry in a crystal system. यदि कौन सी क्लास पूछ ना मैं ताको hollow headal क्लास पूछ सपोज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक सिस्टम. तो आइसोमेट्रिक सिस्टम जदि नबा तार hollow headal क्लास पूछ कौन hexaoctahedral class. So hexaoctahedral class पूछ कौन it is the hollow headal class. तो मैं ताको गैलेरी टाइप पूछ तो hexaoctahedral है hollow headal class. तो ता अंडर जहाँ फॉर्म आसे सब जान कौन hollow headal form. तुम्हें क्यूब नियो octahedral नियो dodecahedral नियो all are what hollow headal form. So hollow headal class हो hollow headal form हो एटा गोटे पर्टिकुलर सिस्टम रे जी सबरो अधिक सिमेट्री देखउथबो ताको कहबे आमे hollow headal form और class. So hemihedral form. So hemihedral form खाली एती गोटे कांसेप्ट रखो जे गोटे hollow headal form रे जेतिकटा फेस देखाउथबो hemihedral तार आधा. तो हमें कहबे कि octahedral केतरा फेस अछि 8टा फेस अछि तार hemihedral form रे 4टा फेस. Correct. So it is a form that required or that has a half number of faces of a hollow headal. कौन सी hollow headal form रा half number of faces थिबो बा एमिति कहि परिबो it is a form which required half the number of faces to show hollow headal symmetry. तोर octahedral ना आधा हला कोन tetrahedral. Tetrahedral कोन दरकार ताको आउ चारटा दरकार फुल सिमेट्री बा hollow headal देखिया. So you can write down the hollow headal form. It has half the number of faces of a hollow headal form. Example I mean tetrahedral
a hemihedral form of octahedral. तो फास्ट हॉलोहेड्रल होची तम जति फॉर्म थो ताटो अधा हले कोन हेमिहेड्रल तार क्वार्टर नंबर हले tetrahedral. So tetrahedral has quarter number of faces of an holohedral form. Holohedral form कोन quarter number of faces जति थिबो तल त कोन दी tetrahedral. देखा so quarter number of faces शो करंती जोड़ा तुम्हारो आइसोमेट्रिक सिस्टम रे गोटे क्लास इज कोन tetrahedral class. So that shows तुम्हारो quarter the number of faces of holohedral form. है ना they have quarter the number of faces of an holoidal form and they doesn't have any plane or center of symmetry. They doesn't have any plane or center of symmetry. और plane of symmetry नहीं ये center of symmetry नहीं. और 2-3 form देखो तो तुम्हें tetrahedral तार center of symmetry नहीं की plane of symmetry नहीं. What is hemimorphic form? तो एमती गोटे क्रिस्टल रखुଛନ୍ତି ये टाइप ऑफ थिंग देव भाव दिस इज एन एक्सिस हमरे ये एक्सिस रिप्रेजेंट करछो above these axis at the end of these two axes a end रे और a end रे you will find dissimilar faces तो तुम यदि एवडा गोटे क्रिस्टल करछो तो तुम गोटे एक्सिस तो रिप्रेजेंट करछो बोथ द एंड तुम सेम टाइप ऑफ फेस पाउछ एठी तरह तो सेम से तुम सेम टाइप ऑफ फेस पाउ बट एठी यदि तुम both end रे you will find dissimilar faces तो ता कोनते हेमिमॉर्फिक फॉर्म कौन hemimorphic so hemimorphic form होची these forms have dissimilar faces about an axis these forms are dissimilar faces about the two ends of an axis so देखो write down these faces these forms have dissimilar faces about the two ends of an axis of symmetry. About the two ends of an axis of symmetry. So जो axis से दिखाती जो axis along ये सब हुए गोटे साइड रे तुम गोटे टाइप ऑफ फेस पाइबो आ गोटे साइड रे आ गोटे टाइप ऑफ फेस पाइबो that axis is called as a polar axis तो polar axis so देखो this axis is called as polar axis धर पिरामिड रे एग्जांपल ले पारे सब धर तुमे एमती गोटे गोटे साइड रे गोटे प्रकार फेस थाउची ठीक है ता बेस रे देखा को इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ नहीं सो एटा सिस्टम कोन करबो हेमिमॉर्फिक फॉर्म है हेमिमॉर्फिक में अधा हला तो इट इज अ टाइप ऑफ form where it lacks center of symmetry कोन तुमको सेंटर गोटे पॉइंट नबो ताठो ए फेस जति दूर रहथबा कथा से फेस सति दूर तमे डीटा एक्सिस एंड रे डिसिमिलर फेसेस थिबो ताले सेंटर ऑफ सिमेट्री हबो सेट पे हेमिमॉर्फिक फॉर्म लैक्स सेंटर ऑफ सिमेट्री
enantiomorphic. Enantiomorphic form are those forms that doesn't have any plane of symmetry or center of symmetry. अगर plane of symmetry नहीं की center of symmetry नहीं. जो फॉर्म तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं ताको कोन दिगण एनान्सियोमॉर्फिक फॉर्म. So enantiomorphic form will the maybe भावे थी कि there are two forms, they are mirror image of each other, but left right are reversed. तो डिफरेंट लाइक में सब देखी थी. देखा देखना. डिफरेंट लाइफ में हमें मिरर अगर छेड़ा है ना मिरर अगर छेड़ा ला हमारा लेफ्ट राइट रिवर्स है जाए हुए कि नहीं तो सेम आ जाए. सेटा देखो गोटे फॉर्म देखो जोटी जिते एनान्सियोमॉर्फिक फॉर्म कहुए माने दुईटा फॉर्म जोटा कि लेफ्ट राइट कौन रिवर्स है जोटा तुम गोटे फॉर्म रे लेफ्ट साइड बोलता गोटे फॉर्म रे कौन राइट साइड पॉजिटिव नेगेटिव कौन पॉजिटिव नेगेटिव. These are two form we can say they are mirror image of each other but the left right is reverse. So left handed में आपको positive form right handed में आपको negative form.